So now the question comes that how do we stimulate the muscle in order for it to contract? Skeletal muscle contracts when it receives an impulse from a neuron. An impulse moves along the axon of a motor neuron and it arrives at the presynaptic membrane. A neurotransmitter generally, which is known as ACH, across it diffuses across the neuromuscular junction and binds to receptor proteins on a postsynaptic membrane, which is on the muscle fiber as well. Okay, so the binding of ACH stimulates the ions channels to open so that sodium ions enter to depolarize the membrane and generate an action potential in the sarcolemma. Impulses pass along the sarcolemma and along the T tubules towards the center of the muscle fiber. The membranes of the SR are very close to the T tubules, and the arrival of the impulses causes the voltage channel, calcium ion channels to membrane to open. वो diffuse out करते हैं SR से down a very concentration gradients, और फिर वो calcium ions होते थे which bind to the what? The troponin molecules so they can change their shape. इसी तरह ट्रोपोमिन जब ट्रोपोमाइसिन के साथ expose होगा and all of that, the myosin heads are going to attach to the binding sites, and when there is no longer stimulation from the motor neuron, the calcium ions would again close. ठीक है, वो आपके पास कैल्शियम आयन चैनल क्लोज हो जाते हैं, मतलब कि नो मोर एक्शन पोटेंशियल नहीं आ रहा होगा ना पीछे से, जब कुछ स्टिमुलेशन ही नहीं हो रही है. सो calcium ions would then leave their binding sites on the troponin, and tropomyosin moves back to the cover of myosin binding sites on the thin filaments. When there are no cross bridges between thick and thin filaments, the muscle is in a relaxed state, and there are different events that occur at neuromuscular junction. सबसे पहले action potential rise, diffusion of calcium ions into the neuron, दे फ्यूज विद द प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन. ठीक है, वो न्यूरॉन की प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में दाखिल हो जाएंगे. देन एसीएच वुड बी रिलीज्ड, एसिटाइल कोलिन वुड बी रिलीज्ड, जो कि साइनेप्स क्रॉस करेगा, वो रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करेगा सार्कोलेमा में, तो सोडियम आयंस के लिए चैनल खुलेगा. वो मेम्ब्रेन को डीपोलराइज करते हैं. ये जो जहां पे डीपोलराइज होगी, इसका मतलब कि यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल आ गया है. गॉट इट? Yeah. और जैसी एक्शन पोटेंशियल आ गया, वो टी ट्यूब्यूल्स तक फैलेगा. ठीक है, टी ट्यूब्यूल्स में आपको पूरा स्ट्रक्चर पढ़ा अपने उस दिन, हमने पूरी एक डायग्राम बनाई है मसल की. ठीक है, दैट इज, फिर वहां पे कैल्शियम आयंस वुड बाइंड टू ट्रोपोनिन, वही सारा कुछ होगा. मायोसिन हेड होंगे, सार्कोमेर शॉर्टन हो जाएगा जब वो कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा. So how do you provide energy for this muscle contraction? Muscle contraction is one of the uses of energy in animals, and a contracting muscle uses a lot of ATP. The very small quantity of ATP in the muscle fibers in a resting muscle is used up rapidly once the muscle starts to contract. More ATP is produced by respiration, and both aerobic respiration inside the mitochondria, when that cannot supply ATP fast enough, तो फिर lactate fermentation भी होने लग जाती है, which is kind of a anaerobic respiration. वो फिर anaerobically भी थोड़ा सा काम होना शुरू हो जाता है, इसलिए बंदे को जो थकावट होती है. ठीक है, रेस्टिंग में आना जरूरी, वरना क्या होगा कि जो आपका सारा एरोबिक रेस्पिरेशन से ऑक्सीजन यूज्ड अप होगी, बॉडी का ऑक्सीजन डेट में आ जाती है, फिर वो मजबूर हो जाती है मसल्स लैक्टेट फर्मेंटेशन करने में. एंड कैन यू टेल मी व्हाई इज लैक्टेट फर्मेंटेशन नॉट गुड फॉर द बॉडी? No, I forgot. लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, रिमेम्बर? Yeah, yeah. लैक्टिक एसिड नहीं आता मसल्स में, वो बिल्डअप हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा. एसिडिक एनवायरनमेंट की वजह से फिर क्या होगा मसल्स में? हाँ, 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 I एंजाइम्स मर जाएंगे, forgot. कोई ना कोई एंजाइम्स होंगे डिफरेंट. ठीक है. All right. Next, we have coordination and control in plants. Plants, like animals, have communication systems that allow coordination between different parts of their bodies. They respond to changes in their external and internal environments, as you saw in chapter 14. Most plant responses involve changing some aspect of their growth in response to factors such as gravity, light, and water availability. ये डिफरेंट एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो कि प्लांट को अफेक्ट कर सकते हैं. वो चेंजेस क्या हो सकती है उसके एनवायरनमेंट, एक प्लांट के इर्द गिर्द क्या चेंजेस होंगे? या ऑक्सीजन में कमी और कार्बन डाइऑक्साइड में कमी, ग्रेविटी है, पानी की अवेलेबिलिटी, लाइट आ रही है कि नहीं आ रही है. एंड द प्लांट्स कैन देन आल्सो रिस्पॉन्ड फेयरली क्विकली टू चेंजेस इन कार्बन डाइऑक्साइड concentration, lack of water, grazing by animals, and infection by fungi and bacteria. Some of these responses are brought about by quick changes in the turbidity, as happens when stomata respond to changes in humidity, कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन एंड वाटर अवेलेबिलिटी. वो तो हमने थोड़ा बहुत होम्योस्टेसिस के अंदर ही पढ़ा था कि वो रिस्पॉन्ड करते कैसे हैं, लेकिन रिस्पॉन्स आता कैसे और वो रिस्पॉन्स कंट्रोल कैसे होता है, वो हमने अब पढ़ना है.
करता कैसे रिस्पॉन्ड, वो तो हमने कहाँ पढ़ा था, होम्योस्टेसिस में। डू यू रिमेम्बर एनी वन रिस्पॉन्स जो हमने पढ़ा था फॉर प्लांट्स? So there's the one in which like oxygen is produced in the meristem. There's one. ऐसा कौन And सा प्लांट है? no, never mind. हाँ, वो एब्सिसिक Maybe I एसिड just वाला याद है, ए भी एक होता था, ठीक है, ठीक है। yeah. गुड। अब रिस्पॉन्स हमने ऑलरेडी पढ़ लिया होम्योस्टेसिस के अंदर। आए कैसे थे? इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन हुई थी प्लांट्स। Like animal cells, plant cells have these electrochemical gradients across their cell surface membranes, and they also have resting potentials. As in animals, plants' action potential are triggered when the membrane is depolarized. यहाँ पे भी दोबारा क्या हो रहा है, उनकी membrane depolarize हो रही है, and in at least some species, some responses stimuli are coordinated by action potentials. The sensitive plant mimosa responds to touch by folding up its leaves. माइक्रो इलेक्ट्रोड्स अगर आप लैब में इंसर्ट करो लीव सेल्स पे, तो वो एक डिफरेंस डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने एक मसल के अंदर, लैब के अंदर 2 इलेक्ट्रोड घुसाए थे और वहां पे हमने देखा था कि यार वोल्टेज चेंज हो रहा है -72 +30। इसी तरह आप मिनी इलेक्ट्रोड्स प्लांट्स की लीव्स में भी इंसर्ट करके चेक कर सकते हो, विच इज वेरी सिमिलर टू द एक्शन पोटेंशियल इन एनिमल्स। The depolarization results not from influx of positively charged sodium ions, but from the outflow of negatively charged chloride ions. Repolarization is achieved in the same way as in neurons by the outflow of potassium ions. Plants do not have specific nerve cells, but many of their cells transmit waves of electrical activity that are very similar to those of neurons of animals. तकरीबन उसी तरह का एक impulse generate होता है जैसे animals और humans में। The action potential travels along the cell membranes of plant cells and from cell to cell through plasmodesmata that are lined by cell membrane. The action potentials generally last much longer and travel more slowly than in animal neurons. Many different stimuli trigger action potential in plants. For example, different chemicals coming into contact with the plant surface triggers the action potentials as well. For example, dripping a solution of acid on soybean leaves also causes an action potential. Potato plants में कोलोराडो बीटल जब फीड करता है आके लीफ पे, वो भी एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर रहा है। तो ह्यूमंस में कोई और एक्शन पोटेंशियल होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे जनरेट होते हैं? आप उंगली आपने जाके माचिस पर रख दी, गर्म लगा, कुछ ठंड लगी। प्लांट्स में क्या हो रहा है, बहुत सी चीजें, कोई डिफरेंट केमिकल भी प्लांट में एंटर हो जाए, वो भी एक एक्शन पोटेंशियल स्टिमुलेट कर रहा है। आप ये देखो, अगर एसिड आ जाए सोयाबीन पे तो भी ट्रिगर हो रहा है। आप ये देखो कि कोलोराडो बीटल है, एक कॉकरोच जैसी चीज है जो आके लीव्स को खाना शुरू हो गई है, उसने भी एक एक्शन पोटेंशियल इंड्यूस करने का साबित किया है। एंड इट इज थॉट दैट दीज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आर यूज्ड टू कोऑर्डिनेट द रिस्पॉन्सेज टू डैमेज एंड अदर स्ट्रेसेस। वीनस फ्लाई ट्रैप होता है। कैन यू टेल मी व्हाट इज द वीनस फ्लाई ट्रैप? So in the Venus flytrap, essentially what happens is that there's this teeth, this tooth-shaped structure. या Okay, when an insect settles on top of the Venus flytrap, it suddenly closes it on the animal. But essentially to attract that insect, they have some sort of nectar floating on top of it just to lure that insect in. So they close that insect and then they eat it alive. So, गुड। कभी वीडियो देखी वीनस फ्लाई ट्रैप कैसे काम करता है? yeah. ओके, कैसे काम करता है? अंदर कोई और Okay. चीज होती है उसके, एक्सेप्ट दैट यू एक्सप्लेन मी अ बिट। Dude, I haven't really. Okay, it just pushes that. That's what I'm assuming here. But from the documentaries that I've seen, I haven't seen the entire digestive process. ठीक है। एक Venus flytrap है, Dinonia muscipola, is a carnivorous plants, obtains a supply of nitrogen compounds by trapping and digesting small animals. वो रिस्पॉन्ड कैसे करता है? आके उसके ऊपर कोई चीज टच करेगी, ठीक है। तो Charles Darwin made the first scientific study of this carnivorous plant, describing Venus flytrap as one of the most wonderful plants in the world. The specialized leaf is divided into two lobes, either the side of a midrib, and the inside of each lobe is often red and has a nectar-secreting glands around the edge to attract insects. Each lobe has a three stiff sensory hairs that respond to being deflected, and the outer edges of the lobes have stiff hairs that interlock to capture the insect inside. The surface of the lobes has many glands that secrete enzymes for the digestion of trapped insects. क्या चीज है? एक तो outer edges, पहली बात, they have stiff hairs। दूसरी जो उनके लोब्स के सरफेस है वहां, वो एक एंजाइम सिक्रीट करते हैं। Venus flytrap stimulates action potential that travel very across the leaf, causing it to fold over and capture the insect. इतना तेज, आप सोचो कि उसको डिटेक्ट भी करना है और रिस्पॉन्ड भी करना है विद इन मिली सेकेंड्स। तो कितना एक, इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लांट जो कि रिस्पॉन्ड भी कर रहा है, अपने हेयर से सिग्नल लेके भेज के दोबारा रिस्पॉन्ड भी कर रहा है बंद होके।
Deflection of the sensory hair activity activates calcium ion channels. अब वही चीज होगी, क्या होगा, जैसे ये सेंसरी हेयर के ऊपर आया, calcium ion channels open हो गए, these channel line open so that calcium ions flow to generate a receptor potential. If two of these hairs are stimulated within a period of 20 to 35 seconds, one hair is touched twice within the same time interval, action potential travel आके हो भी चुका होता है। आप सोचो कि एक एक मक्खी आई है, उसके भी एक टांग एक बाल पे लगी है, सोचो, और अभी उसने पूरा पाव रखा है दूसरे हेयर पे, जैसी टच की उससे पहले एक्शन पोटेंशियल पहुंच चुका है। सो यू कैन इमेजिन कि कितनी तेजी से आपके पास ट्रैवल करता है। When the second trigger takes too long to occur after the first, the trap will not close, but a new time interval will start. If a hair is deflected a third time, फिर ट्रैप दोबारा क्लोज हो जाएगा। तो एक रिकवरी टाइम भी होता है हर बंदे का, जैसे ह्यूमन से भी एक रिकवरी टाइम था। व्हाट डिड वी कॉल दैट पीरियड, कैन यू टेल मी? The saltatory period. क्या चीज? Wait, wait. The refractory period, yeah. माय गॉड, हाँ जी बिल्कुल, रिफ्रैक्टिव पीरियड इधर वीनस फ्लाई ट्रैप में भी होगा। तो द लोब्स ऑफ द लीफ बल्ज अपवर्ड्स व्हेन द ट्रैप इज ओपन एंड दे आर इन कॉन्वेक्स शेप, मतलब ये खुले होते हैं। नो वन इज क्वाइट श्योर हाउ द ट्रैप क्लोजेस, बट एज डार्विन नोटिस्ड, द lobes rapidly change into a concave shape, bending towards so that the trap snaps shut. This happens too fast to be simply the result of water movement from the cells on the top of the lobes to cells underneath. Instead, it is likely that the rapid change occurs as a result of the release of elastic tension in the cell walls. However, the trap is not completely closed at this moment. To seal the trap, it requires ongoing activation of trigger hairs. मजीद और मजीद, क्योंकि शिकार अंदर ही है, अब वो और हेयर्स को अंदर बैठा बैठा ट्रिगर कर रहा है ताकि बंद ही रहे। आपको यू नो यू नीड अ कांस्टेंट रिस्पॉन्स कि वो चीज बंद ही रहे, अनलेस द प्रे इज एबल टू एस्केप इट। It will further stimulate the inner surface of the lobes thereby triggering further action potential. और जितने action potential आते रहेंगे आपके पास response होता रहेगा। This forces the edges of the lobes together, sealing the trap so the prey can be digested. Further deflections of the sensory hair, तो यार एक बात तो कंफर्म है, जहां जहां ये बेचारा अंदर से गलती से, माइंड्स नहीं होती जैसे आर्मी के सोल्जर्स माइंड्स को ट्रिप करते रहते हैं, बेचारे जैसे मक्खी पहले इधर आएगी, इधर से झटका खा के उधर जाएगी, इधर से झटका खा के उधर जाएगी, उसको क्या पता, ये तीनों बाल ही उसके सिग्नल लेंगे, इधर तीनों बालों से उसके सिग्नल जा रहे हैं विनस फ्लाई ट्रैप को। और हेयर द कैल्शियम आयन स्टिमुलेट द एक्सोसाइटोसिस ऑफ वेसिकल्स। अब होता क्या है कि जब फर्दर डिफ्लेक्शन होती जाती है इन सेंसरी हेयर्स की बाय द इंसेक्ट, they stimulate the entry of calcium ions into the gland cells. Here, the calcium ions stimulate the exocytosis of vesicles containing digestive enzymes in a similar way to their role in synapses. The traps stay shut for up to a week for digestion to take place. Once the insect is digested, the cells on the uppermost part of the single layer does not trigger closure. This prevents the trap closing when it rains or when a piece of debris falls into a trap. अब होता क्या है, जब एक दफा इंसेक्ट का डाइजेस्ट हो गया, जो सेल्स होते हैं ना ऑन द अपर सरफेस ऑफ द मिडरिप, दे ग्रो स्लोली, सो द लीफ रीओपन्स और टेंशन दोबारा बिल्ड हो जाती है सेल वॉल में। ये क्लोजिंग और ओपनिंग जैसे स्टोमेटा की सेल वॉल की गेम नहीं होती कि वो स्टोमेटा ही टर्जिड होता है और फिर फ्लैसिड हो जाता है, जब बंद होना होता है, खुलना होता है टर्जिड हो जाता है। इस तरह करके दिस वीनस फ्लाई ट्रैप आल्सो वर्क्स। Venus flytraps have two adaptations to avoid closing unnecessary and wasting energy. Firstly, द स्टिमुलेशन ऑफ अ सिंगल हेड डज नॉट ट्रिगर क्लोजर। क्योंकि आप तो सोचोगे कि अगर बारिश होने लगी तेज, ठीक है, ये एक कतरा अगर पानी करके तब भी बंद हो जाएगा, नहीं, सिंगल हेड नहीं, एक कांस्टेंट पूरी बॉडी ट्रिगरिंग मोर देन 1 to 2 to 3 हेयर्स एटलीस्ट, तब वो आपके पास एक रिस्पॉन्स क्रिएट होता है। This prevents the traps closing when it rains or when a piece of debris falls into the trap. Second, the gaps between the stiff hairs that form the bars of the trap allow very small insects to crawl out, and the plant would waste energy digesting a very small meal. At least एक बड़ा मील तो हो कि जो एक सरफेस एरिया से भी अंदाजा हो जाएगा ना ये वीनस फ्लाई ट्रैप है अगर पूरा, तो हल्का सा कतरा यहाँ गिरे नहीं, एक पूरा एक इंसेक्ट आए अंदर तो पता लगेगा कि यार ठीक है बड़ा मील आया है, खाना ज्यादा है आज, अब ज्यादा चीजें ट्रिगर हो रही हैं। एटलीस्ट एक सर्टेन थ्रेशोल्ड तो हो। इतना सेंसिटिव तो ह्यूमन भी नहीं है कि आपका एकदम से रिस्पॉन्स जनरेट हो, एक सर्टेन थ्रेशोल्ड होता है, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल जो हमने भी क्रॉस करना होता है। इज इट क्लियर? Yeah. Good job. Let me show you one thing as well, how this Venus flytrap works according to your A2 biology syllabus वाला, वरना तो बहुत डॉक्यूमेंट्री होती है। अच्छा जी। When it comes to deadly predators, plants
generally don't come to mind. After all, they're typically at the bottom of the food chain. But when it comes to deadly predators, plants generally don't come to mind. After all, they're typically at the bottom of the food chain. But the Carolinas are home to one vicious vegetable, the Venus flytrap. Using its famous trap, it can catch prey faster than you can blink. But what happens next inside a Venus flytrap? Funny thing about Venus flytraps, they don't usually trap flies. In fact, winged insects only make up about 5% of their diet. And we really ought to be calling it the Carolina spider trap, because it's only found in the Carolinas and actually a little piece of the Carolinas, and it mostly eats spiders and ants. But of course, regardless of species, that bug is going to have a bad day. It all starts when the victim wanders into the trap, possibly lured by the bright red hue or fragrant scent. Or maybe they're just unlucky. We think the spiders mostly just blunder. The trap itself looks like an open mouth. It's made of 2 pads attached to a hinge. On each one of those pads, there are usually 3 little trigger hairs in a kind of a triangle. And those trigger hairs are very, very sensitive to being disturbed. The first time a spider knocks into a hair, it sets off an electrical signal, sort of like the electrical currents in your brain. That signal starts the countdown. If the bug escapes within 20 to 30 seconds, nothing else happens. That way, the plant doesn't waste energy. But if the bug brushes against another hair, snap! In just 100 milliseconds, about 4 times faster than you can blink, the trap slams shut. Then the trap rapidly goes from convex to concave on each side, and the long little spikes on the rims of the pads interlock to form kind of a cage. Now, of course, the spider isn't happy with this turn of events, so it tries to escape, which is exactly what the plant wants. The more the spider struggles, the more it knocks into the trigger hairs, the tighter the trap closes. And after an hour or 2, the trap locks completely. Cells on the edges of the pads secrete moisture, which glues the edges together to form an airtight seal. Suddenly, that trap isn't a mouth anymore. It's a stomach. Digestive juices flood into the closed compartment, dissolving the spider's soft organs. And the trap's lining sucks up that nutrient-rich slushy. After about a week, all that's left is an empty husk, the spider's exoskeleton. Next, the trap reopens and the husk tumbles out. The trap is now ready for its next meal. But bugs aren't the only food the trap captures. Just like leaves on other plants, the trap's surface contains a green pigment that lets it convert the sun's energy into sugar through a process called photosynthesis. So then, why bother with the bugs? Well, Venus flytraps live in acidic, waterlogged soil that doesn't have many nutrients. So instead of slurping up nitrogen and phosphorus through its roots, it needs to borrow some from the bugs. That explains why it shares its home with other hungry carnivorous plants like pitcher plants and sundews, which could only mean one thing. North Carolina is not a fun place to be a bug. All right, so have you ever heard of the term auxins? Yes, Okay, क्या होते हैं फिर बता दो. they're like a plant growth regulator and they're found in the meristems of a plant. Yes. कौन से cells? They're found in the meristem. Meristem, all right, yes, ठीक है, good. So chemical communication in plants कैसे हो रही है? एक तो हमने देख लिया impulses के through action potential. Chemical communication, what does chemical communication mean वैसे? Communication through chemicals. Good. बहुत अच्छे, मैं कहता हूँ level हो गया. Hormonal.
जैसे ह्यूमंस के अंदर वी हैव टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस, एक आपस नर्वस और एक एंडोक्राइनल, जिसको हम हार्मोनल भी बोलते हैं। यहाँ पे केमिकल कम्युनिकेशन होगी, और वो केमिकल से मुराद है प्लांट हार्मोन्स या फिर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट ऑफ द कम्युनिकेशन विद इन द प्लांट्स। Unlike animal hormones, plant growth regulators are not produced in specialized cells within the glands, but in a variety of tissues. They move in the plant either directly from cell to cell by diffusion or active transport, या फिर phloem sap और xylem sap के थ्रू जाते हैं. What are phloem and xylem? Okay, phloem is where like sugar is carried like up and down, and xylem is like the dead. One second. Xylem is basically essentially just dead tissue that carries minerals and water in a plant. Yeah. Some may not move far from their site of synthesis, but may they have effects on the nearby cells as well. Now we are going to talk about two plant growth regulators that are in your syllabus. वैसे तो बहुत है. Auxins पहली बात है, which influence many aspects of growth, including the elongation growth, which determines the overall length of the roots and shoots as well. फिर एक हम पढ़ेंगे gibberellins, which are involved in seed germination and controlling the stem elongation. So plant growth regulators are any chemicals produced in plants that influence their growth and development, including auxins है, ABA, cytokinins, gibberellins. अब auxins और gibberellins क्या है? Auxins are a plant growth regulator that stimulates cell elongation, and gibberellins are the plant growth regulator that stimulates the seed germination and regulates the plant height. A lack of gibberellin can cause dwarfness as well. What is dwarfness? Dwarfness means like a stunted growth or short height. Good. ABA is another plant hormone which controls, जो अभी हमने homeostasis के अंदर ही पढ़ा था, which controls the response of plants to environmental stresses such as shortage of water. वो आपने पूरा मैकेनिज्म देखा था कि एब्सिसिक एसिड कैसे जब प्लांट में पानी की कमी है वो स्टोमेटा को बंद कर देता है, लेकिन जब प्लांट ज्यादा हो जाए या ग्रेडियंट के क्रॉस, वो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा कीप्स हैपनिंग. दैट इज द रिस्पॉन्स दैट वी हैव कवर्ड इन होमियोस्टेसिस इन प्लांट्स. Plant hormones interact with receptors on the surface of the cells or in the cytoplasm or nucleus. These receptors usually initiate a series of chemical or ionic signals that amplify and transmit the signal within the cell in the much same way. Auxins एक वो chemical हैं जो कि जिनमें एक type IAA है, indole 3 acetic acid, which is often referred to as auxin. ये grow होते हैं in meristems of shoots and roots, as you just mentioned previously twice as well, where the cells are actually dividing. Why meristems? Because ये वो जगह जहाँ पे cells divide होते हैं. They divide by mitosis. It is transported back down the shoot or up by the root by active transport from cell to cell, या आपने जैसे कि ऊपर नीचे फ्लोएम के थ्रू होता रहता है. अब जो ज्यादा स्टेम की ग्रोथ है, प्लांट ग्रो कहाँ से करना शुरू करता है? जो आपको नजर आता है रूट से. आपको तो रूट्स नजर ही नहीं आती. यू कैन सी द स्टेम. Growth in a plant occurs at meristems, such as those at shoot tips or root tips. Growth occurs in 3 stages: cell division by mitosis, cell elongation and absorption of water, and cell differentiation. Auxin is involved in controlling growth by elongation, and auxin stimulates cell to pump the hydrogen ions into the cell wall. The cell walls become acidified, which leads to a loosening of the bond between cellulose, microfibrils, and the matrix that surrounds them. अब ऑक्सीजन क्या करेगा? ऑक्सीजन पंप करेगा हाइड्रोजन आयंस को प्लांट के सेल वॉल में. अब प्लांट्स पढ़े, याद रखना यहाँ पे सेल वॉल मौजूद है. ऑक्सीजन आर गोइंग टू पंप हाइड्रोजन आयंस वेयर? इनटू द सेल वॉल, जिसकी वजह से सेल वॉल थोड़ी सी एसिडिफाइड हो जाएगी, क्योंकि जितना ज्यादा पीएच होता है उतना ज्यादा हाइड्रोजन आयंस, तो उतना कम पीएच होगा, उतनी ज्यादा एसिडिटी हो जाएगी, जिसकी वजह से जो सेलुलोज के बॉन्ड्स होते हैं, वो आपने एएस में पढ़ा हुआ है, द बीटा ग्लूकोज के ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस होते हैं, ठीक है. वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस बहुत ज्यादा अफेक्ट हो जाते हैं. इससे करना क्या पड़ता है सेल को? इट एब्जॉर्ब्स वाटर बाय ऑस्मोसिस एंड इंक्रीजेस द इंटरनल प्रेशर विच कॉजेस द वॉल्स टू स्ट्रेच, और सेल इंक्रीज कर जाता है आपके पास साइज के अंदर. इज इट क्लियर? गुड. इस तरह करके लुक व्हाट्स हैपनिंग. आपके पास ये सेल सरफेस मेम्ब्रेन है, बाहर आपके पास सेलुलोज की सेल वॉल होती है, यहां से हाइड्रोजन आयंस पंप हो रहे हैं किधर? सेल वॉल के अंदर, जिन्होंने सेल वॉल का पीएच कम कर दिया है, विच मीन्स दैट इट हैज मेड इट एसिडिक.
Now, the details of this process are shown in the figure above as well, where the molecules of auxin bind to a receptor protein on the cell surface membrane, and the binding of the auxin stimulates ATPase proton pumps to move hydrogen ions across the cell surface membrane from the cytoplasm into the cell wall. These proteins are known as expansins, जो कि एक्टिवेट कब होती है? एक्सपेंशंस होती हैं जो एक्सपेंशन कॉज करेंगी, और वो प्रोटीन सेल वॉल के अंदर कब एक्टिवेट होंगी? जब हाइड्रोजन आयंस आपके पास पंप हो जाएंगे एंड व्हेन दे डिक्रीज द पीएच। जैसे पीएच डिक्रीज होगा, एक्सपेंशंस क्या करेंगी? सेलुलोज के ना बड़े टाइट लिंकेज होते हैं, जब उनमें लिंकेजेस को लूज कर दूंगा तो क्या होगा? कैन यू टेल मी? वो No. फैल जाएंगे। लूज कर रहा हूं ना मैं। एक्सपेंशंस क्या करें? दे लूज द लिंकेजेस ऑफ सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स। गॉट इट? Yeah. कैसे लूज कर रहे हैं? Disrupting the hydrogen bonds between the cellulose microfibrils and the surrounding substances such as hemicelluloses and all of that. तो overall auxins क्या कर रहे हैं? You can see hydrogen ions are being pumped. ठीक है, जब hydrogen ions pump होंगे, when auxin is produced, hydrogen ions are actively pumped into the cell wall. pH decrease होता है, it becomes more acidic. pH जब decrease होगा, expansins proteins activate हो जाएंगी. Expansins क्या करेंगे? They are going to lose up the cell wall by breaking the hydrogen bonds. Hydrogen bond जब आप तोड़ोगे, आपके cellulose की wall lose हो जाएगी, and when it becomes loose, it is actually going to start expanding. Got it? Yeah. Good job. अच्छा जी, इधर आओ। And welcome back to this US Open Office Plan. Miller just lobbed a message way over Jones. If a plant has enough water, minerals and energy, it will grow, right? Well, sort of. But there is more to it, like why do plants bend towards the light and not just grow straight? And why is it that the stem grows up but the roots grow down? It isn't as if the plant has eyes to tell it where the sun is. You should already know about tropisms, so phototropism and geotropism. But if you have forgotten, watch our video called Plant Hormones, Tropisms first. But how does it actually do this? Having been made in the tips of the stems and roots, auxin is moved in solution by diffusion to older parts of the plant. In the stem, the auxin causes the cells to change in elasticity. More elastic cells absorb more water and can grow longer. Strangely though, stems and roots respond differently to high concentrations of auxin. Whilst the stem cells grow more, the root cells actually grow less. So auxins make plants grow. But why do they bend towards the light? How do they know to do this when they don't have eyes? The bending happens because the light hits on one side more and breaks down the auxins on that side of the stem. So then growth slows down on the light side. The faster growth on the dark side causes the shoots and leaves to turn towards the light, which is ideal for the plant for photosynthesis. Auxin is produced in the tips of growing shoots. If the tips are cut off, then no auxin can be produced and so no plant growth. If the tips are covered whilst auxin is still produced, light cannot break it down and so phototropism cannot occur. The plant just grows straight up and does not bend towards the light. Pretty straightforward so far. Now let's switch it up a bit. Auxins have the opposite effect on root cells. In roots, auxins cause less growth. The shaded side of roots contain more auxin and so they grow less. This enables the light side of the roots to grow more and bend away from the light. And if that wasn't weird enough, we have the opposite happening with auxins to gravity too. In a horizontal root, the bottom side contains more auxin and grows less. So the root bends downwards in the direction of gravity. So positive geotropism. But of course, the stem responds differently. In a horizontal stem, again, the bottom side contains more auxins because it is less directly hit by sunlight. But because auxins cause growth in stems, the bottom side grows more, causing the stem to bend upwards, against the direction of gravity. So, negative geotropism. But I'm giving auxins too much credit. They don't work alone. They have a partner in crime. Cytokinins. You don't need to know anything about these hormones, other than the fact that they work alongside auxins. There is another plant hormone, however, that you do need to be aware of. Gibberellins.
Once a seed germinates, the roots and shoots start to grow. But for this, the seed needs energy. Luckily, the seed releases a hormone called gibberellin, which causes the starch in the seed to turn into sugars and provides the seed with energy to grow. As well as causing shoot growth, gibberellins can also stimulate flowering and the production of fruit in some plants, and they also work with auxins to cause stem elongation. So now we know all about how plant hormones work. Have a think about how they could be used. We will discover some uses in our video on how we use plant hormones. All right, is it clear? Yeah. अब जिब्रेलिन्स जो भी हमने थोड़ा सा वीडियो में इसका ब्रीफ ओवरव्यू देखा है, हाउ डू जिब्रेलिन्स रेगुलेट द प्लांट ग्रोथ? First of all, gibberellins are the plant growth regulators that are synthesized in most parts of the plant. They are present in especially high concentrations in young leaves and in seeds, and are also found in stems where they have an important role in determining their growth. Gibberellins promote cell extension in the stems in a different way to auxins. Gibberellins stimulate enzymes known as XZT in the cell walls of stems. अब gibberellins क्या करेंगे? Cell extension कैसे? By stimulating enzymes XCT. XCT bonds तोड़ेगा hemicellulose molecules के साथ that cellulose move further apart. माइक्रोफाइबर्स जो होते हैं ना, एक तो वो आपस में बॉन्ड होते हैं, फिर कुछ बड़ी फाइबर्स भी होती है नोन एज हेमिसेलुलोज. अब उनको भी और अलग करेगा और एक्सटेंड करेगा. जिब्रेलिन्स आर आल्सो इन्वॉल्वड इन द कंट्रोल ऑफ जर्मिनेशन. ये उसका मेन काम है. ये वाला काम तो आपको ऑक्सिन्स भी कर रहे हैं, लेकिन ये उसको बस थोड़ा सा इनहांस कर देते हैं, काइंड ऑफ अ साइड किक टू ऑक्सिन. जिब्रेलिन्स का असर काम है कंट्रोल ऑफ जर्मिनेशन में, और ये ऑक्सिन्स नहीं करते, सिर्फ जिब्रेलिन्स ही करेंगे. When the seed is shed from a parent plant, it is in a state of dormancy. मतलब कि soil में पड़ा हुआ है, वो किसी plant से गिरी है. It is metabolically inactive. This is useful because it allows the seed to survive in adverse conditions, such as through a cold winter, only germinating when the temperature rises in the spring. अब एक बार्ले सीड होता है जैसे कि, ठीक है, बार्ले स्टेट एक डॉर्मेंसी में होता है, बहुत कम पानी होता है और मेटाबॉलिकली इनएक्टिव भी होता है. वैसे एक्सपेंशंस क्या था? कैन यू टेल मी व्हाट वर एक्सपेंशंस जो भी हमने पढ़ा ऑक्सिन्स में? They're the one that like loosen the हम्म, microfibers, ठीक है. and they also like it helps with cellulose. No, it लूज अप loosens बाय the ब्रेकिंग attachments of once again of microfibers of cellulose during the elongation growth. बाय Yeah, ब्रेकिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड्स. ठीक है. yeah, by breaking. Number 1, water uptake initiates germination. Embryo synthesizes gibberellin in response to water uptake. अब होगा क्या? जर्मिनेशन में वाटर एब्जॉर्ब हुआ, ठीक है, एम्ब्रियो भी अंदर एक छोटा सा जो सीड होता है, ये सिंथेसाइज करने लगेगा जिब्रेलिन को. क्यों? कैसे? इन रिस्पॉन्स टू वाटर अपटेक. जैसे ही सीड ने पानी एब्जॉर्ब किया, जिब्रेलिन सिंथेसाइज होना शुरू हो गया. एक लेयर होती है एलियरॉन लेयर विच सिंथेसाइज द एमाइलेज इन रिस्पॉन्स टू जिब्रेलिन. जिब्रेलिन के रिस्पॉन्स में एक लेयर होती है एलियरॉन दैट स्टार्ट्स टू कन्वर्ट एंड प्रोड्यूस एमाइलेज. अब एमाइलेज क्या करता है? स्टार्च जो होता है, हर प्लांट के अंदर स्टार्च होता है विच इज अ काइंड ऑफ अ स्टोर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. ये वो कार्बोहाइड्रेट का स्टोर है, वो कन्वर्ट होने लग जाएगी माल्टोज में, क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए. Amylase hydrolyzes starch to maltose, which is broken down to glucose and transferred to the embryo and respired. Endosperm tissue ये वो है जहाँ पे starch के reserves होते हैं. Now I'm going to repeat once again germination क्या है. ठीक है, embryo है, ठीक है, ये आपके पास embryo है और इसकी एक layer है जिसका नाम है एलियोरॉन. ठीक है. अब होगा क्या? वाटर अपटेक हुआ. जब आपके पास इस सीड के अंदर पानी आया, इस पानी के आने की वजह से क्या हुआ? द एम्ब्रियो द सीड है, उसने सिंथेसाइज करना शुरू कर दिया जिब्रेलिन. इज इट क्लियर? Yeah, जिब्रेलिन जब प्रोड्यूस हुआ तो इस एलियरॉन लेयर को रिस्पॉन्स किया. ये सब इंटरकनेक्टेड है. वाटर आया, उसने क्या रिस्पॉन्स जनरेट किया? एम्ब्रियो प्रोड्यूस जिब्रेलिन. जिब्रेलिन प्रोड्यूस, उसने क्या रिस्पॉन्स जनरेट किया कि एलियरॉन बनाए एमाइलेज. एमाइलेज क्या करता है? स्टार्च को माल्टोज में तोड़ा, क्योंकि स्टार्च से तो नहीं एरोबिक रेस्पिरेशन हो सकती ना, आपको मोनोसैकेराइड या डाइसैकेराइड प्रोड्यूस करना पड़ेगा माल्टोज को तोड़ के, या माल्टोज को फर्दर ग्लूकोज में तोड़ोगे, तभी आपके पास ये दोनों एरोबिक रेस्पिरेशन में आ जाएंगे टू प्रोड्यूस एनर्जी, ताकि रेस्पिरेशन हो सके. The seed contains an embryo which will grow to form the new plant when the seed germinates. The embryo is surrounded by endosperm, which is an energy store containing the starch. On the outer edge of the endosperm, ये पूरा endosperm है, ये जो layer है ना, यहाँ पे सारे starch के reserves हैं आपके पास already. It is also covered, the outer edge is covered by aileron layer.
and the whole seed is covered by a water protective layer. Endosperm, wo tissue in some seeds such as barley that stores starch and other nutrients. Aeroon layer is a layer of tissue around the endosperm that synthesizes amylase during germination. Now the absorption of water at the beginning, अब ये सारा summary हो रही है, मैं दोबारा repeat नहीं करूंगा, ठीक है? Listen carefully. The absorption of water at the beginning of the germination stimulates the embryo to produce gibberellins. These gibberellins diffuse to the aileron and stimulate the cells to synthesize amylase. पानी आया तो जिब्रेलिन आया तो amylase produced. Amylose ने क्या किया? Starch molecules which were there in the endosperm, converting them to soluble maltose molecule. क्योंकि जब तक कोई चीज soluble नहीं है तब तक आप respiration कर ही नहीं सकते हो. Starch is insoluble, polysaccharide है ना. These maltose molecules are then converted to glucose. अब ग्लूकोज हो गया, इसको वापस सीड में भेजो जहां पे ग्लूकोज से आप रेस्पिरेशन कर सकते हो, बिकॉज इट इज द मोस्ट रेडी सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी respired to provide energy as the embryo begins to grow. Gibberellins cause these effects by regulating genes that are involved in the synthesis of amylase. In barley seeds, it has been shown that application of gibberellin causes an increase in the transcription of mRNA as well, ताकि प्रोटीन से प्रोड्यूस हो सके. But barley seeds में ये जब ट्रांसक्रिप्शन वाले बढ़ने लग जाते हैं, it has this action by promoting the destruction of DELA protein. डेला प्रोटीन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट अब हो गया क्योंकि ये लास्ट टाइम पेपर में आ चुका है. डेला प्रोटीन इनहिबिट कर देता है कुछ फैक्टर्स दैट प्रमोट ट्रांसक्रिप्शन, और ये एक आपके कंट्रोल ऑफ जीन एक्सपेंशन में हेल्प करेगा. और ये हम सारा चैप्टर 16 जो आपका है उसमें हमने बहुत डिटेल में करना है. द थर्ड लास्ट चैप्टर आई गेस, या सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट चैप्टर है जिसमें डेला प्रोटीन्स का बहुत बहुत एक इंपॉर्टेंट पूरा टॉपिक मौजूद है. एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, दैट इज द एंड ऑफ योर चैप्टर ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. रीड आउट ऑल ऑफ दी समरी, ठीक है? जो 2 पेजेस की समरी है इसको रीड करें और टेक अ 10 minutes ब्रेक. आफ्टर 10 minutes you can rejoin the class for chemistry as well.